आपको बताती हूँ। मुझे जॉ में चो करने में प्रॉब्लम है काफ़ी, और दूसरा ये पेन जो है ईयर के थ्रू ऊपर भी जा रहा है, और टीथ का एनामल भी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम कि अब वो अलाइनमेंट नहीं रहता और टीथ पे प्रेशर आता है सोते टाइम, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन मुझे स्टार्ट हैं। कब से ये सब? ये हुआ बचपन से, मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट धीरे धीरे अब वो पिछले 1 साल से ज़्यादा एग्रीवेट नहीं, पर जब मुझे AMJ पेन हुआ था, जब मैं गई थी ENT के पास, तब से ये प्रॉब्लम था। बीच में रुक जाता है फिर हो जाता है। अभी मैं एम्स भी गई थी पीछे, तो डॉक्टर एजॉय हमारे नोन हैं, एजॉय रिचर्डसन, तो उन्होंने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, बट मैं कि कौन सी सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था? टेस्ट करा दिए थे, उन्होंने भी देखा पेन है, तो आपको जॉइंट सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है क्या? मैंने क्योंकि जिस दिन हुआ था उन्होंने मुझे मेडिकेशन देखी और ये बोला था 1 वीक हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, देन वी विल सी कि आपको क्या इफेक्ट होता है। वो आफ्टर 10 to 15 डेज मुझे पेन फिर से चालू हुआ और मेरे में कुछ फंक्शन से मैं गई नहीं, फिर मुझे लगा कि मैं आपको एक बार दिखा लेती हूँ। उससे पहले मेरी कंसल्टेशन क्या हुआ मैडम? उससे पहले एक कंसल्टेशन ऑनलाइन मैंने आपसे ले लिया था वॉशर। ओके। तो फिर मुझे लगा कि मैं आपको दिखाई नहीं हूँ, तो फिर मैं वहाँ गई नहीं दोबारा। उन्होंने बस ये प्रिस्क्रिप्शन दिया था और मैं समझा था जब सर्जरी होगी तो आप एक बार पहले आएंगे, फिर हम कुछ टेस्ट और करेंगे, तो हम देखते हैं। जब आपको ये जो पेन स्टार्ट हुआ है ना 1 ईयर पहले, तो यू वेंट फॉर एनी डेंटल ट्रीटमेंट या एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट? just before that. व्हाट ट्रीटमेंट? Root canal? कौन से दांत? लास्ट हाँ, ऊपर के नीचे? दोनों। इसी की वजह से हुआ है ये। It happens because I just checked the scan, I'll tell you. Was settled at RCT without a cap. Yeah, they keep the mouth open and they hyperextend it and they keep on doing this. Just affects the joint. They've given you also soft diet and hot water fermentation. आपने दोनों की? सॉफ्ट डाइट लिया, हॉट और कुछ नहीं। हॉट वाटर फर्मेंटेशन नहीं किया। कोई और जॉइंट्स में आपको पेन है बॉडी में? नहीं, और तो नहीं है, बट तो विटामिन पहले स्लिप डिस्क का इशू था। Okay. So after yoga, she's alright for the past 1 year or so. Okay. L4, L5 and cop L4, L5 में थोड़ा सा ठीक है। विटामिन D3 सब टेस्ट किया था आपने? सब नॉर्मल है? करीब 3 महीने पहले तो then she's on a vitamin D supplement uprise थी वीकली एक में? वीकली, बट नहीं इंजेक्शन for 3 months। इंजेक्शन भी है? 2 इंजेक्शन थे पहले 3 तो काफी कम था फिर आपका? कितना था? 10 से कम? आज नियर अबाउट 10 और 10 or 17. Okay, that all can also have these kind of. I think he has written chronic subluxation, osteoarthritis, and all, but I don't think. आजकल डॉक्टर जैसे मैं थोड़ा यॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा अगर तेज खांसी तो यहाँ पे पेन ये आता है मुझे। मिनट। हाँ, बंद करो मैडम। ओके, यहाँ पे भी साउंड आ रहा है? साउंड यहाँ भी है। ओपन। ओके, दर्द हो रहा है ना? साइड राइट साइड में तो बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, इतना बंद करो बस। बाइट पेन है ना? ओके 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 ओके, रिलैक्स। ये बंद करो नॉर्मली, रिलैक्स। ठीक है। देखो, आपका प्रॉब्लम जो है,
अभी acute है right now, मतलब you've had some trauma to the joint because of which the joint ligaments में कोई मतलब damage है. Because scan में it's not showing any major osteoarthritic change, ऐसा कुछ नहीं है, bone में major issues नहीं है. So what it means is because they did RCT or something, your jaw was kept open. 8-9 month back. हाँ जब but उसके बाद ही आपको दर्द हुआ है ना? हाँ, Because see, you're 47. हाँ जी, इसमें इनका विटामिन डी ये है 19.4 काफी कम है हाँ. 19.4 और उसके बाद 2 इंजेक्शन और फिर then weekly she's taking tablets. अब मेरे ख्याल से शायद Normal हुआ रहेगा. जून so I think It should be near about normal. Okay, now the thing is, the first thing is her jaw is not in the normal position. Exactly. You have got what is called as maxillary hypoplasia, matlab your upper jaw is not grown enough. So that is why if this problem would have been sorted when you were 25, this problem what you're having now wouldn't have happened at all. What is happening, your jaw is always closing more for 45 years because the upper jaw has to come actually more forwards and downwards. But nahi aaya hai aapka. That is why you're having what is called as an end-to-end bite and everything. But that is the history for your problem. Currently, that RCT has exaggerated the joint issue. Other joint also you are having clicking, which means even that is not in a great position. Now, for such a kind of a joint, there are two options. You're 47, right? One option is to do conservative treatment. So you try Ayurvedic treatment, put some massage, oil, and try to reduce this pain. In a lot of patients, the pain will go away. Remember, you do not open your mouth too much. You make sure that you have soft solid diet, sleep straight, not on the sides, do some exercise that reduces the joint pain, things like that. That is a conservative management. The other option is surgical option. In surgical option, there are two options for you, not one. The first option is we do surgery on your upper jaw. Okay, why? Because your upper jaw is not grown adequately, and when I bring your upper jaw outwards and downwards, so your face looks better, you look younger, your chewing efficiency increases, your mouth opening reduces automatically by moving the upper jaw. Because both the jaws are related. This is a moving jaw, this is a fixed jaw. So I move the upper jaw forward and downward, this moves less. So that gives more rest on the joint head. This is an indirect treatment. Probably less than 10 surgeons in the world will suggest you this. It's not a normal thing. I'm telling you because I do a lot of things on the jaws. It works for a lot of patients. The second option is more of a direct procedure. So you go and do surgery in the joint. Both the joint you open because you've got what is called as an internal derangement. That is why you're getting the sound. Internal derangement has caused because of some other issue. Wrong bite, wrong position of the jaws. But since it is caused, then we can attack the internal derangement through a surgery here, tighten the ligaments and muscles and correct the internal derangement. This is the second surgical option. I do not advise surgery for patients like you straight away. My rule of thumb is if your pain is there for 6 months, we try conservative treatment for 6 months. It will not heal in 1 month. This is my experience. It doesn't heal very quickly. 1 month pain is there, 1 month it will be all right. 6 months means 6 months lag jayega aapko. So don't be in a hurry for quick fix solution. Nahi milta hai. Then you will just be paranoid. You will be tensed. अरे क्या नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही ठीक होता है. एंड जॉ का इश्यू इज लाइक अ साइक्लिक थिंग. मतलब एक बार डैमेज हो गया तो साइकिल की व्हील की तरह, तो वो जो डैमेज व्हील वापस नीचे आता ही है क्योंकि वो घूमते रहता है ना. तो इट्स लाइक दैट विथ योर जॉइंट. एक बार डैमेज हो गया है, एक बार आपको इंजुरी लग गया है, इट विल टेक अ वाइल फॉर टू हील. एंड विद इंक्रीजिंग एज, with less D3, with little bit of jaw issues, that will be longer only, not short. All of these things you have to keep in mind. It will take some time. हाँ, I think you should give it. The best option is jaw surgery. अभी नहीं, अभी तो best is conservative. I'm telling you all the options so that you first wait for 6 months. I'll give you some Ayurvedic suggestions. You can meet some doctor or get any other treatment done. Because see, you are 47. You're already. I would think you're beautiful for your age. So it's not like you want to get something for that. And thirdly, your pain.
So pain, you have to sort it out. If pain is sorted out without surgery, it's the best. Surgery is the last option. मैं सॉफ्ट डाइट जैसे राइस, हाँ। वो सब चू करने में भी अब वो टीथ एक दूसरे से लगते ही दर्द तो होता है, हाँ, ये बिकॉज ऑफ द जॉइंट ओनली. धीरे धीरे कम हो जाएगा. वो ग्रिप भी नहीं आ रहा. हार्ड लाइक चपाती फिर भी मैं कुछ चू चपाती तो आपको नहीं खाना है ना, सॉफ्ट डाइट बोला है. एक कंडीशन तक खा सकती हूँ, बहुत ज्यादा जैसे हमें चू करना होता है. नहीं मैडम, you should not eat chapati now. आप At least for 6 months till the time. At least a few weeks. Chapati is not a good diet. रोटी नहीं खा सकते आप. दाल चावल is okay, not roti. Chapati we don't realize, but lot of chewing is required for roti. That is not good. Idli is fine. Idli is fine. Khichdi is fine. Roti is fine. Poha, yeah, something okay. Something not chew much. Minimal chewing. Chapati you have to grind it a lot. So a lot of chewing items you have to avoid now. And try just conservative management first. And then, because you're already in your late 40s, then after that you can consider a surgery if you want to. But the first option that I'm saying, that will also enhance your facial aesthetics. It's not going to make you look bad, it's going to make you look better. So there is a plus point anyways in the facial aesthetics. But because your concern is pain, I would still want you to wait and see, because your goal is not aesthetics, your goal is functional. So we'll go for that. So we'll wait for some more time. 6 months. 6 months you should wait, because 7-8 months तो आपका है complaint pain का. आप 6 months wait कीजिए. I'll give you 5 things you do like that. I'll also suggest you a very good Ayurvedic doctor in Bangalore. मतलब you have travelled all the way to Nagercoil. I reckon you can travel to Bangalore also. Suppose. Your fame and husband brought us here. No, I mean, I'm just trying to get you the more better person for this kind of a treatment. In case you can travel, I can get you his number. He's a very brilliant doctor. Only for the Ayurvedic aspect of the joints, because it's a very good science. It's not that Ayurvedic is bullshit. No, it works a lot. And certain things in our field, matlab, we only know surgery. We don't know anything else. But doesn't mean there is another solution. There is another solution. इसका सर्जरी बताया था स्लिप हाँ. डिस्क का. किनका? इनका स्लिप डिस्क का L4 L5. हाँ. And then we said we will go for alternative treatment, and then we went. It's all right. Solved हो गया ना? Exactly. That's what. So sometimes there are many ways to skin a cat, and always remember one thing. I'm not saying don't go for surgery, but surgery is the last option. Even Hippocrates said it. Surgery is the last solution in life. तो बाकी कुछ नहीं अगर आपको सेट होता है. Some of them have cosmetic concerns and they're 25, so they don't have any risks. डॉक्टर एक होता है. Then we will do surgery. That's easy. हाँ. इनको एक साइकोलॉजिकल भी है. जब से एक डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका नहीं. इनका चू टेस्ट कर सकते हैं. साइकोलॉजी कुछ नहीं है इनका. है फंक्शनल प्रॉब्लम ना. अरे मेरे को फीलिंग से पता लग जाता है इमीडिएटली. दर्द है, मसल्स एंड टेंडर, जॉइंट क्लिकिंग इज देयर एंड इट इज क्लास 3 बाइट. कुछ साइकोलॉजिकल नहीं है. फंक्शनल है ही है. उसके ऊपर साइकोलॉजिकल अरे हो जाता है यार. अगर हर रोज दर्द है हमको तो साइकोलॉजिकल देखो ये इजीली बोल सकते हैं कोई विषय ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको राइट ऑफ करो, कुछ और दवा दो. ऐसा लगा कि पिछले 6 महीने से जब नहीं इनका सब कुछ हिस्ट्री करेक्ट है. Because not 1 or 2 patients, I see a lot of them with this kind of history. Dentists don't realize that by keeping the mouth open for a 47-year-old lady, it can affect the joint, especially when they have a bite like this. उनको लगना चाहिए. If you keep your mouth open, it's all right. If I keep my mouth open, it's okay. But she already has a difficult bite. 10 sittings in fact. फिर यही है cause. So because she's lived a life for so long without pain, with this class 3 bite or with this kind of a bite, I think it should be solvable. You should be able to solve. After Ayurvedic treatment, हाँ. क्या ये bite मेरा ठीक होगा? नहीं. बाइट कैसे ठीक होगा? Bite ऐसे ही रहेगा जैसे आपको पहले था. क्या आपका ठीक होगा? दर्द ठीक होगा. और जो आपको जो अभी बोल रहे हैं ना, महसूस नहीं हो रहा बाइट करते वक्त, क्योंकि आपके जॉइंट के अंदर स्वेलिंग है. When the joint is swollen inside, तो क्या होता है ना, you can't bite on the teeth because it is, even if it's a 1/4 millimeter, that pressure you'll not get. And if you put pressure, that swelling increases. Swelling increases, pain increases. A cycle. That's why we are asking you not to chew. There's a logic for that. And the jaw has 2 movements. One is rotation
then is coming down, not like our door. इसमें एक ही मूवमेंट है, ऐसा ऐसा हिंज पूरा जॉइंट में ऐसा नहीं होता. ये देखो एक ही है मूवमेंट, इसमें ऐसा नहीं है. पहला पहला राउंड होता है, देन नीचे आता है. That's when you get the clicking. When you open little bit, you can see, then it comes down. There are two movements on everybody's joint. So you should do the first movement. चलेगा, कुछ नहीं होता, rotation. But when it comes down, that causes problem. That is why we ask you not to open your mouth too much. You can see it. When I keep my hand and open your mouth, you can feel the sound. Sound comes when the jaw is coming out. Cut आता है इसकी वजह से. That movement you should stop. That's all. Stop that movement. Prevent mouth opening severely. Apply some oil, hot water fermentation. इसका लॉजिक क्या है? हॉट वाटर क्या करता है? ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है. ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, आपको हीलिंग जल्दी होता है. इट्स सिंपल है लॉजिक. ऑयल क्या करता है? सेम थिंग करता है. एंड दीज ऑयल्स विच दीज, हाँ वो दैट इज देयर सब्जेक्ट, मतलब बट इट हैज एन इफेक्ट दैट गेट्स टू ब्लड सप्लाई इंक्रीज. दैट वर्क्स फॉर यू. दैट्स ऑल. एंड देन जस्ट स्लीप स्ट्रेट ऑल्सो. साइड में नहीं सोना आप, बिकॉज यू स्लीप ऑन द साइड ना, दिस वन मैंडिबल यू शेप है, तो it can affect the other joint when you sleep on the sides. Sleep straight. स्लीप स्ट्रेट भी तो डॉक्टर मुझे फिर कॉक्सिल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है बहुत लंबे टाइम तक. ठीक है, फिर स्लो, then it's okay. That's the bigger problem. Generally supine straight sleep में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको बैक को. Most probably Everybody suggests to sleep that only. but after some time 2-3 hours जो है मैं वो बदल सकते हो, पर But just याद रखो हाँ नहीं याद है वो मुझे कि you should not मैंने- you should avoid sleeping on the jaws, because we tend to sleep like this and all, like this. Just avoid